अच्छा जी, जो पीछे हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये उसी का ही पार्ट है, ये भी फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी। और इसके साथ मैंने दूसरा टॉपिक ऐड नहीं किया। मैंने कहा ये ना हो कि तंग पड़ जाएंगे, हर दफ़ा जो है वो 70-75 स्लाइड्स होती हैं। ये 46 तो ख़त्म हो जाएंगी। 46 तो हम फिर टाइम को खुद लटकाते हैं ताकि 46 पूरी हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा होती हैं। तो मैंने इसको ऐड नहीं किया है, वो छोटा सा टॉपिक ट्रेड हार्मोनाइजेशन भेजें, तो लेकिन उसको फिर नेक्स्ट के साथ फिर कर लेंगे। फिर उनको हम उससे अगला टॉपिक जो है वो भी इस तरह लेंथी है, तब डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। The Treaty of Rome recognized the need to remove restriction on the free movement of capital between member states, however, only to the extent necessary to ensure the proper functioning of the common market. This was later confirmed. This was later confirmed in the seminal case, in which the court found that, unlike the provisions on the free movement of goods, persons, and services, the complete free movement of capital could undermine the economic policy of member states. अब स्टार्ट में जो इनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जैसे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट पर्संस है, अगर उसी तरह फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी अलाउड कर दिया इन्होंने, ईयू ने, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो अंडरमाइन हो जाएंगी, जो उनका बेसिक पर्पज है। ठीक है। और उसमें जो मेजर रीजन थी वो ये थी कि जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज, उसके अलावा उसके साथ साथ जो करेंसी की वैल्यू है उसकी उसकी उसके मुताबिक भी वो चीज़ें जो हैं वो मेंबर स्टेट्स के लिए नुकसान का बायस थी। ठीक है। जो स्टार्ट में उन्होंने इसी प्रिंसिपल को प्रिवेल किया कि अगर फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं मेंबर स्टेट्स की वो अंडरमाइन हो जाएंगी। इन व्यू ऑफ दिस अप्रोच टू द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मैनी मेंबर स्टेट chose to introduce and maintain safeguarding measures such as exchange controls, that is control to ban or restrict the amount of foreign currency or local currency that is allowed to be traded or purchased. ठीक है। तो फिर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हर मेंबर स्टेट ने अपने मुताबिक जो है वो इम्पोज करना स्टार्ट कर दिए। Stage 1 of the Economic and Monetary Union introduced complete freedom for capital movements, scrapping all remaining restriction and allowing for full liberalization. First, through Council Directive, Article 11 of which prohibited all restrictions on the free movement of capital, and later on in the Maastricht Treaty. अच्छा, जो इनिशियली जिसमें सबसे पहले इसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस रिमूव की गई वो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन थी। उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी जो ट्रेड पॉलिसी या फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल को रिस्ट्रेन कर रही थी, उसको रिमूव कर दिया गया था। The treaty provisions on the free movement of capital were complemented by those on payments. Ex Article 1061 EEC provided that EEC याद है ना आप लोगों को, European Economic Community, provided that member states must authorize means of payments as consideration for the movement of goods, persons, services, or capital. Now, Article 63 TFU, the successor to Article 106 EEC, prohibits all restriction on the payments. The scope of the free movement of capital, the structure of the treaty provisions are as follow. Article 63 TFEU contains the basic rule abolishing restrictions on the free movement of capital. Article 64 extends the
Article 63 prohibition on the free movement of capital with third countries where relevant. ठीक है जी. Article 65 contains derogation from Article 63. Contains Article 66 contains ground for derogation from Article 64 TFEU. The definition of capital movement. The free movement of capital applies principally to capital movements which occur between EU member states. The court, recognizing that there was no definition of capital movement in the treaty, in case so and so, the court held that the nomenclature extended to council directive could be used as a point of reference when determining whether a measure constitutes a restriction on the free movement of capital. In reference to this judgment and the annex of directive, the court has declared that the following transactions fall within the notion of capital movement. Mortgages concerning the creation of a mortgage in foreign currency, direct investment, financial investment, granting of loans and credits, gifts in money or kind. अच्छा, इसमें जो डेफिनेट जहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा है वहां पे साथ ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रीटी में कैपिटल मूवमेंट के ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन जो एनेक्सेस थे काउंसिल के डायरेक्टिव्स के साथ उसमें इसको डिफाइन किया गया. तो जहां पे उसको डिफाइन किया गया था कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो उसकी वही डेफिनेशन है जो काउंसिल डायरेक्टिव्स में उसको डिफाइन किया गया है उसी को कंसिडर किया जाएगा कैपिटल मूवमेंट की एक्सप्लेनेशन की. ठीक है जी. उसके बाद कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं कैपिटल मूवमेंट के. उसके बाद द कोर्ट हैज आल्सो कंसीडर्ड ट्रांजैक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन द एनेक्स टू डायरेक्टिव्स so and so as capable of falling within the definition of capital movement. For example, in case the court found that the receipt of dividends from a foreign company fell within the scope of Article 63 TFEU. मतलब मजीद उसको फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया है. डिविडेंड्स होता है शेयर्स प्रॉफिट किसी भी कंपनी में. ठीक है. हाँ, शेयर्स का जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड कोट किया जाता है. ठीक है. The court found that the receipt of dividends from a foreign company fell within the scope of Article 63 TFEU. अब इसको पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया था लेकिन बाद में उन्होंने इसको भी इसका पार्ट बना दिया. ठीक है जी. The direct effect of Article 63. Although in the case the court ruled that Article 63 TFEU did not have direct effect, this position was later reversed in joint cases. Here the court held that the provisions of Article 63 laid down a clear and unconditional prohibition for which no implementing measure was required. This means that Article 63 does not require any implementing legislation at member state level, but instead directly confers right on individuals upon which they can rely before national courts. ठीक है. आर्टिकल 63 को डिफाइन यहाँ मजीद एलेबोरेट कर रहे हैं. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 63 ने हर किस्म की कंडीशन जो हैं वो उसको रिमूव कर दिए. जो भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल पे वो सब के सब उसने रिमूव कर दी. और उसमें साथ साथ ये भी उसने एक्सप्लेन कर दी कि किसी किस्म के मेजर्स मेंबर स्टेट को लेने की जरूरत नहीं है जहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल वाला मामला होगा. ठीक है जी. और आगे मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन इसलिए कि आर्टिकल 63 डज नॉट रिक्वायर एनी इंप्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन एट मेंबर स्टेट लेवल. ठीक है जी. But instead directly confers right on individuals upon which they can rely before national courts. ठीक है. अब इसका स्कोप उन्होंने मजीद वाइड करते हुए उसको एक्सप्लेन किया कि मेंबर स्टेट जो हैं वो उन रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन जो मेंबर स्टेट के नेशनल्स हैं वो अपने नेशनल कोर्ट्स में उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर किसी किस्म की उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाएगी.
This direct effect also extends to capital movement between EU member state and third countries. ठीक है जी, थर्ड कंट्रीज वो है जो EU की मेंबर स्टेट नहीं। Scope of Article 63. According to Article 63, all restriction on capital movement between member states are prohibited. This prohibition extends to all obstacles, not just discriminatory ones, laying down a general prohibition which goes beyond the mere elimination of unequal treatment on grounds of nationality. Therefore, like the other fundamental freedoms, the article covers measures of both direct and indirect discrimination, in addition to those which are non-discriminatory but nonetheless hinder access to the market. ठीक है, अब उसका स्कोप यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है और उसमें मजीद उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 63 जो है वो किसी किस्म के ऑब्स्टेकल, किसी भी किस्म के ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, किसी किस्म के, और इसमें कहीं पे भी, जैसे हम पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करते हैं उसमें हम ये बात करते थे कि डिस्क्रिमिनेटरी होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा, सारी चीजें होंगी। इसमें कोई किसी किस्म का एम्बार्गो नहीं है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। आगे मजीद फर्दर जब एक्सप्लेन करेंगे तो बता देंगे कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ पे नहीं है। लेकिन आर्टिकल 63 का जो स्कोप है वो बेसिकली जो डिफाइन कर रहा है वो ये है कि किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली एक फंडामेंटल फ्रीडम है। ठीक है, द आर्टिकल कवर्स मेजर्स ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एडिशन टू दोज व्हिच आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बट नॉनदलेस हिंडर एक्सेस टू द मार्केट। अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी भी होंगे, उसके बावजूद अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होगी जो कोई हर्डल क्रिएट करेगी ट्रेड में, मार्केट में, तो उसको भी उस कंडीशन को भी जो है वो उसके लिए भी वो प्रोहिबिट कर रहा है। आर्टिकल 63 उसका स्कोप जो है वो उसको एक्सटेंड कर रहा है। In relation to direct discrimination, the court has found in case so and so an Austrian mayor which exempted only Austrian nationals from the need for prior planning authorization was directly discriminatory. ठीक है, सी द केस so and so। अच्छा, अब ये नेशनल कोर्ट का केस है, ऑस्ट्रियन मेयर विच exempted only Austrian national from the need for prior planning authorization was directly discriminated। ठीक है, ये नेशनल कोर्ट का केस आ गया जी। आगे द कोर्ट has also found that Article 63 precludes national rules which prevent investors from other member states from acquiring more than a given number of shares in certain privatized undertakings in the banking, insurance, energy and transport sectors। ठीक है जी। The court has further found that a provision that makes foreign investment subject to prior authorization constitute a restriction to the free movement of capital। ठीक है, दूसरी स्टेट वालों का भी उसमें भी ये विद इन द स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट चैलेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रियन नेशनल की बात क्लियर कट उन्होंने की हुई है। मतलब ऑस्ट्रियन नेशनल की बात करने का मतलब ये है कि कोई और नेशनल अगर वहां पे आएगा तो उसको प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी the court has further found that a provision that makes foreign investment subject to prior authorization constitute a restriction to the free movement of capital। ठीक है, in case the court held that a stamp duty payable under Austrian tax law on loans taken out by Austrian companies from companies in Belgium was in breach of Article 63 TF। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात की। इसमें ऑस्ट्रियन टैक्स लॉ ऑन लोन्स टेकन आउट बाय ऑस्ट्रियन कंपनीज, ठीक है, फ्रॉम कंपनीज इन बेल्जियम। ठीक है, अब वो सेम कंपनीज हैं, ठीक है, लेकिन उसी की ब्रांचेस जो बेल्जियम में है उनसे वो टैक्स जो है वो ज्यादा डिडक्ट कर रहे हैं, वो भी डिस्क्रिमिनेशन।
Lastly, an inheritance tax on property inherited from an EU member state other than Germany, which was higher than the tax payable on property inherited exclusively within Germany, was also deemed in breach of Article 63. ठीक है? ऐसी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अच्छा अब इसको थोड़ा सा ये थोड़ी सी वर्डिंग अंडरस्टैंड करने की बात होती है, ये कान को सिर्फ यूं करके पकड़ते हैं और कुछ नहीं। कोई ऐसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपको फैमिली इनहेरिटेंस में आ रही हो, ठीक है, किसी मेंबर स्टेट, किसी और मेंबर स्टेट में, जर्मनी, ये जर्मन जर्मन लॉ से रिलेटेड बात हो, ठीक है, अदर देन जर्मनी है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो पेएबल है, ठीक है। वैसे जो है वो वहां पे जो टैक्स वो डिडक्ट कर रहे हैं वो कम है, और जो आप किसी और स्टेट से कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। उसको भी कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेशन और ब्रीच ऑफ आर्टिकल 63 डिक्लेयर, ठीक है जी। उसके बाद आगे केस एग्जांपल्स हैं। In case so the court extended the application of Article 63(1) when it considered a Portuguese mayor which stated that non-residents were subject to a higher rate of capital gain tax than residents when transferring immovable property from another member state. The court found that such a mayor was precluded by Article 63 Act as it had the effect of making the transfer of capital less attractive for non-residents. ठीक है जी। इसमें भी सेम जिस तरह ऊपर बात हो रही है उसी तरह यहाँ पे नीचे बात हो रही है कि हायर रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स व्हेन रेजिडेंट ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर मेंबर स्टेट, ठीक है। हाँ, उस पे गेन टैक्स है ना, ये ऊपर बात हो रही है इनहेरिटेंस, यहाँ पे बात हो रही है कि आप फैमिली से बाहर कोई प्रॉपर्टी जो है उसको सेल करना है, ठीक है, तो उस पर गेन टैक्स आपको पड़ेगा, ठीक है। तो उसके रेट का भी डिफरेंस था और कोर्ट ने उसको भी आर्टिकल 63 का ब्रीच डिक्लेयर किया हुआ। इन द गोल्डन शेयर केस, the court followed its approach in the service case by finding that Maria which, despite being non-discriminatory, hindered access to the market are in breach of Article 63(1). In a series of cases, the court established that a type of share often owned by a government which grants the shareholder special voting rights over ordinary shareholder is to be considered as a restriction to the free movement of capital. For instance, in case the court found that provisions which limited the possibility of acquiring shareholdings in the British airports authority over a certain level were in breach of Article 63. This was because despite applying equally to both national and non-nationals of the UK, they nonetheless affected the position of a person acquiring a shareholding to the extent that they were likely to deter an investor from other member states from making such investment and consequently affect access to the market. Basically, जो ब्रिटिश एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रूल पास किया था वो ये था कि जो लोकल्स हैं वो भी शेयर परचेज कर सकते हैं और जो फॉरेनर्स हैं या अदर मेंबर स्टेट नेशनल्स हैं वो भी शेयर परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ा टेक्निकली उन्होंने प्ले किया कि उन्होंने अलाउ तो कर दिया कि कोई फॉरेनर या अदर मेंबर स्टेट का जो नेशनल है वो शेयर परचेज कर सकता है, लेकिन उस पर सर्टन लिमिट इम्पोज कर कि इस लिमिट से ज्यादा वो शेयर जो है वो परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको भी कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भी आर्टिकल 63 का ब्रीच है और shareholding to the extent that they were likely to deter investors from other member states from making such investment and consequently affect access to the market. मतलब अब ईयू को वन सिंगल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ईयू का, जो इनका बेसिक प्रिंसिपल था
यूएस की स्टैब्लिशमेंट का, तो उसका तो प्रिंसिपल डीरेल हो जाता है अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि वो शेयर होल्डिंग शेयर्स परचेज करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन उनमें सर्टेन लिमिट इम्पोज कर दिया है कि जितने भी फॉरेनर्स होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, वो इस लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। कोर्ट ने उसको भी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है। ठीक है जी। This approach to non-discriminatory restrictive measures has been extended to cover cases concerning the movement of dividends. So, in case the court found that a measure which treated dividend pay companies established in another member state less favorably than those established in the Netherlands was liable to deter companies established in another member state from investing in the Netherlands. Thus, the measure was precluded by Article 63. ठीक है, अब वही डिविडेंड्स की जो हमने ऊपर बात की है उसको यहाँ पे वही केस एग्जांपल के साथ वो कोट कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि बेसिकली जो उनकी पॉलिसी है या उन्होंने जो मेजर्स अपने लिए कैपिटल की मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, जहां पे शेयर डिविडेंड्स की बात हो रही है, ठीक है, डिविडेंड्स की बात हो रही है, तो वो भी डिटर कर रहा है कंपनीज को और उनके लिए लेस फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा है वहां नेदरलैंड में इन्वेस्ट करने के। और ये भी जो क्या कहते हैं उनके रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ब्रीच है आर्टिकल 63। ठीक है, द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन थर्ड कंट्रीज of all four fundamental freedoms, the free movement of capital is the only one that goes beyond the boundaries of the internal market to cover the movement of capital between member state and third countries. Article 64। ठीक है, अच्छा, बाकी जितने आपने प्रिंसिपल्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो मेजरली डिस्कस कर रहे हैं ईयू मेंबर स्टेट्स को। ठीक है, जो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है इसका स्कोप है क्या कहते हैं, ऑनलाइन अभी तक मादर से की है। मादर की Of all four fundamental freedoms, the free movement of capital is the only one that goes beyond the boundaries of internal market to cover the movement of capital between member state and third countries. Article 64। जितने हमने अभी तक लॉज पढ़े हैं या प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो डील कर रहे हैं बेसिकली मेंबर स्टेट्स को। ठीक है, उनकी क्या, हाँ, उनकी क्या पॉलिसी होगी और उसके अलावा वो थर्ड थर्ड कंट्रीज के साथ डील कर रहे होंगे तब तब क्या पॉलिसी होगी। ये वाहिद चीज है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो थर्ड कंट्री से भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, और इसका स्कोप जो है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ इंटरनल मार्केट है। ठीक है,
Nevertheless, for capital movements between member state and third countries, member state have the option of implementing safeguarding measures in exceptional circumstances, the possibility of applying restriction that existed before a certain date to countries and certain categories of capital movement, and a basis for the introduction of such restriction, but only under very specific circumstances. आर्टिकल 64 का पार्ट बेसिकली उन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया ना कि किन किन कंडीशंस में जो है वो आप डील कर रहे हैं अगर थर्ड कंट्रीज के साथ तो क्या क्या आपने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर सकते हैं लेकिन एंड में बड़ा लिमिटेड स्कोप दे रहा है ना जहाँ पे कह रहे थर्ड पॉइंट जो है बेसिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन बट ओनली अंडर वेरी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ठीक है. In case the court considered the legality of a Swedish tax law which granted an exemption to taxpayer in respect of dividends distributed by a company established in Sweden or another member state within the European Economic Area, but which refused to grant such an exemption where the distribution of dividend was made by the company established outside the EEA. Unless that country had concluded a convention with Sweden providing for the exchange of information, the court found that the Swedish mayor was in breach of Article 63 as it was likely to discourage taxpayers from investing their capital in companies established outside the EU. Nonetheless, in this case, the court found that the measure was justified on the ground of fiscal supervision. ठीक है? अच्छा इसमें जो मेंबर स्टेट की इन्वेस्टमेंट स्वीडन से रिलेटेड बात हो रही है इस स्वीडन ने जो इसके स्कोप से मतलब थर्ड कंट्री आप कंसिडर करें ना यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से बाहर है उसको आप थर्ड कंट्री कंसिडर करें. थर्ड कंट्रीज के साथ उन्होंने उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज किया ठीक है जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया ये आर्टिकल 63 का ब्रीच है लेकिन उसके साथ उन्होंने जस्टिफाई जो रीजन उन्होंने उसके अगेंस्ट दिया उसको कोर्ट ने जस्टिफाइड या उस मेयर को उन्होंने जस्टिशिएबल डिक्लेयर किया कोर्ट. इसका स्कोप उन्होंने मजीद एक्सटेंड कर दिया ना आर्टिकल 63 तो उससे डील कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि जहां ये जो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जब भी बात होगी ये थर्ड कंट्रीज होंगी ठीक है उनके साथ भी जो आपका रिलेशन होगा उसको भी इसी सिनेरियो में ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर कहीं पे इन्वेस्टर डिटर हो रहा है ऑब्वियसली इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने बनाई थी ईयू मेंबर स्टेट्स के लिए ताकि जो ईयू की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो जब आपस में ट्रेड करें तो उनके लिए किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हो कोई हिंड्रेंस ना हो ठीक है लेकिन जहां पे इकोनॉमी जो है सिर्फ ईयू मेंबर स्टेट की बेस पे तो नहीं चलेगी ना उसके अलावा भी आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स तो चाहिए होंगे तो अगर कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज करेगा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को डिटर करेगी वो भी आर्टिकल 63 का ब्रीच कंसिडर होगा और उसमें रीजन उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है इस पैरा की लाइन है जी 6 लाइन है जहां पे वो बात कर रहे हैं अनलेस दैट कंट्री हैड कंक्लूडेड अ कन्वेंशन विद स्वीडन ठीक है प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. अब उनकी आपस में कोई ट्रीटी साइन हुई भी होगी या कोई उनके दरमियान कोई कन्वेंशन होगी जिसकी बेस पे वो बिजनेस रिलेशन रन कर रहे होंगे अपना ठीक है तो इस वजह से उसको उन्होंने कंसिडर किया है कि वो भी एक तरह से वो इस पे वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा जो ईयू मेंबर स्टेट पे हो ठीक है. हकीकत बात यह है कि इनके पास भी ज्यादा बातें करने के लिए नहीं थी इस तरह इन्होंने हमें लिमिटेड स्कोप दिया वरना
इनके पास ज्यादा बातें करने के लिए नहीं थी, इसलिए केस एग्जांपल कोट कर करके आगे ले गए इसका। हम्म। हाँ, नहीं ज्यादा होंगे, बीच में केस एग्जांपल्स आई हैं वो हमने डिस्कस नहीं की। वो जो आर्टिकल्स के साथ आर्टिकल्स के साथ नहीं, सॉरी, वो जो कंडीशंस आ रही थी जहाँ पे मॉर्गेज वगैरह हमने डिस्कस किया, उसके साथ सारी केस लॉस की एग्जांपल। पब्लिक इंटरेस्ट पर तो बेस कर रही है सारी चीजें। आजकल तो इनके इतने हालात खराब हुए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट तो दूर ही रहेगी। वहां पे जो बुरा हाल हुआ है, वो जो मुसलमानों को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। डेरोगेशन फ्रॉम द फी मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफिकेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफिकेशन या पब्लिक इंटरेस्ट को जो बार बार ये कोट करते हैं ना, उसकी मेजर रीजन होती ही यही है कि जो जितनी मेंबर स्टेट्स हैं ना, उनके पास अगर कोई डिफेंस नहीं बचता ना, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें जो है उड़ा, कोर्ट्स भी बामरे मजबूरी उनको वो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं या उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या जो उन्होंने मेजर्स लिए हुए हैं उस रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने के लिए वो सफिशेंट है या प्रोपोर्शनेट है भी या नहीं। ठीक है, उससे कम में गुजारा हो सकता है तो उन्होंने ज्यादा क्यों, पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी। Mirroring its approach in other freedoms, the court has found it appropriate in some cases to accept justification for otherwise prohibited measures based on the grounds of public interest, subject to proportionality. This was confirmed in case whereby the court stated that national rules may be justified by the reason referred to in Article 65(1), which are discussed further below, or by overriding requirements of general interest. The court went further to say that for such measures to be justified, they must be suitable for securing the objective pursuit and must not go beyond what is necessary in order to attain it. In other words, any such measures must be proportionate. हाँ, प्रोपोर्शनेट बेसिकली यही होगा ना कि रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए या रीजनेबल मेजर्स होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट का बेसिक मीनिंग आप इसको कंसिडर करें रीजनेबल। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे सेल्फ डिफेंस की हम बात करते हैं ना, सेल्फ डिफेंस में हम कहते हैं कि जो जिस फोर्स की अप्रीहेंशन है, तो जो आप सेल्फ डिफेंस में जो फोर्स यूज करने करें वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर आपको कोई मुक्का मारा और उसको आप फायर मार रहे हैं तो जो आपकी फोर्स है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगी। इसी तरह जो मेजर्स हैं वो अगर उससे लेस मेजर्स में आप उस चीज को उस रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, या वो रिक्वायरमेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर सकते हैं, तो अगर आप उससे उस स्कोप को एक्सटेंड करेंगे तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है। ठीक है, वो जो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात आपको ये पैरा पढ़ाने से पहले की थी, वो एग्जैक्ट वही सेम चीजें इसमें उन्होंने एक्सप्लेन की। The list of public interest justification is open-ended, but to date, the court has accepted inter alia the following: fiscal supervision, the smooth transition from one system to another, where the court consider a possible justification of the need for a seamless transition from one tax system to its replacement. Guarantee of services of general interest, in which the court acknowledged the need of safeguard
the solvency and continuity of postal service. Maintaining a permanent population and economic activity independent of tourist sector, safeguarding the supplies of petroleum, telecommunication, and electricity sectors. However, as with the other fundamental freedom, justification of purely economic nature are not accepted. उसकी examples हैं दिया है. Where the court rejection of public interest justification provided in cases. अब उन्होंने कुछ चीजें जो हैं उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया है या उसको कैटेगराइज कर दिया है या पेन डाउन कर दिया है कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो वो कंडीशंस जो अगर कोई स्टेट इम्पोज करती है तो वो प्रोपोर्शनेट होंगी. तो उसकी केस एग्जांपल्स हैं, साथ साथ वो उन्होंने बता दिए कौन कौन से पॉइंट्स कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए. इसके अलावा अभी तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया. विद द पैसेज ऑफ टाइम टिल डेट जो अभी तक चीजें डिसाइड हुई हैं उसको कोर्ट ने पेन डाउन कर दिए. कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो ये 5 चीजें. ठीक है जी. उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है. पब्लिक इंटरेस्ट में जो प्योर इकोनॉमिक रीजन होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना. एंड में वो यही बात कर रहा है ना. ठीक है. जस्टिफिकेशन ऑफ प्योरली इकोनॉमिक नेचर आर नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है. Furthermore, even if the justification is accepted on the fact, the court often finds that the national measures concerned is not proportionate. This was the case in where the court found that although an Austrian measure requiring prior planning authorization was justifiable on the grounds of maintaining a permanent population and an economic activity independent of the tourist sector, the risk of discrimination inherent in such a system was so high, the mayor was constituted a disproportionate restriction to the free movement of capital. This sentiment was further reinforced by the court when it stated that if the requirement was a declaration and not need for prior authorization, this would be proportionate and thereby in compliance with union law. इसमें वो ये कह रहा है कि जो ऑस्ट्रियन मेजर्स थे जो हमने ऊपर डिस्कस किया प्रायर ऑथराइजेशन, ठीक है, उसके लिए जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी हुई थी वो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन उसमें रिस्क था डिस्क्रिमिनेशन का. वालेकुम सलाम. उसमें रिस्क था डिस्क्रिमिनेशन था. इस डिस्क्रिमिनेशन का ऑल्दो कि वो जो उनकी जस्टिफिकेशन थी वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस रिस्क की वजह से कोर्ट ने उस पॉलिसी को जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी डिक्लेयर किया हो. This sentiment was further reinforced by the court when it stated that if the requirement was a declaration and not a need for prior authorization, this would be proportionate and thereby in compliance with the union. अब वो उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है या उसको आप कहे कि उसको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर वो डिक्लेरेशन होती और एक प्रायर ऑथराइजेशन ना होती तो फिर वो यूनियन लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती, लेकिन उसका नाम या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो उन्होंने प्रायर ऑथराइजेशन दिया हुआ है, तो इस वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 63 की का ब्रीच है. See also the judgment, the court held that the court agreed that the guarantee of service of general interest could justify a measure otherwise prohibited by Article 63(1). In this case, a golden share
in the privatized post office, the special share went beyond that what was necessary to safeguard the solvency and continuity of the provider of universal postal service. ठीक है, अभी एक केस है रिलेटेड टू यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस, ठीक है, उसमें उन्होंने उस चीज को भी उन्होंने जस्टिशिएबल कहा हुआ है, और उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो उनकी सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल इंटरेस्ट को जस्टिफाई करती है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस पे इम्पोज की हुई हैं वो बियॉन्ड है आर्टिकल 63(1) के, ठीक है जी। Treaty derogation under Article 65. Treaty derogations under Article 65. According to Article 65, justified restrictions of the free movement of capital include tax provisions distinguishing between resident and resident taxpayers, or the place where the capital is invested. Measures to prevent infringement of national law relating to taxation and the prudential supervision of financial institutions. Measures to lay down procedures for the declaration of capital movements for the purpose of administrative or statistical information not dealt within this module. Measures justified on the grounds of public policy or public security. These derogations are supplemented by Articles 75 and 215 TFPU, which allow the adoption and imposition of financial sanctions against individuals, groups, or non-state entities to prevent and combat terrorism. अच्छा, इसमें वो सारी कंडीशंस उन्होंने एक्सप्लेन की हैं कि जहां जहां जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इम्पोज किए हैं फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। इससे पहले हमने यही पढ़ा है कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन है ना सारे? और खलील अहमद, बाकी नहीं है कोई भी? आगे चलो बस एंड में फिर देखेंगे। कहाँ कहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एप्लीकेबल हैं, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 65 जो है वो इसको डील कर रहा है, और उसको मज़ीद उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं उसके लिए दो आर्टिकल्स हैं जो उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। एक आर्टिकल 75 है और एक दूसरा आर्टिकल 215 है TFPU का, which allows the adoption and imposition of financial sanctions against individuals, groups or non-state entities to prevent and combat. इससे पहले हम स्टेट से रिलेटेड मटेरियल देखते रहे हैं जो मेंबर स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट इम्पोज की जा रही हैं उनको ये मजीद आर्टिकल 75 और 215 जो है वो एलेबोरेट कर रहा है उसको। Groups of non-state entities to prevent and combat terrorism.
In case the court listed the number of limitation on the to the use of derogation under Article 65, including the following. Such derogations, in the case the court lists a number of limitation to use of the derogation under Article 65, including the following. Such derogations had to be interpreted strictly so that this scope cannot be determined unilaterally by member state. मतलब उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इतनी नैरो होनी चाहिए कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उसको अपने मुताबिक जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट ना कर दें. Such derogations cannot be misapplied so as to serve purely economic ends. ठीक है. और उनकी एप्लीकेशन जो है वो इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस जो है वो इकोनॉमिक एंड्स को कवर करना हो. Such derogations are subject to principle of proportionality. Article 65(1)(a) provides a specific derogation which allows for different tax treatment of non-residents and foreign investment. In other words, under this article, national tax laws of the member state can continue to distinguish between taxpayers according to their place of residence or where their capital is invested. ठीक है. अब जो आर्टिकल 65(1)(a) है वो स्पेसिफिकली डील कर रहा है नॉन रेजिडेंट्स को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ताकि जो मेंबर स्टेट है उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोजिशंस हैं वो उसके मुताबिक ही करें. दो डिफरेंट चीजें हैं, नॉन रेजिडेंट होना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना. ठीक है. However, this derogation is not unlimited. As mentioned above in the case, the provision must be strictly interpreted. This was confirmed in the case in which the court found that the derogation did not mean that any tax legislation distinguishing between taxpayers was automatically compatible with EU law. ठीक है. मतलब कोई भी किसी हिसाब से भी उस टैक्स लेजिस्लेशन को डिक्लेयर नहीं कर सकता अंडर दिस आर्टिकल कि वो कंपैटिबल है विद द EU लॉ. ठीक है. Furthermore, Article 65(1)(a) is expressly made subject to Article 65(3), which said that any tax differentiation must not represent a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction. Therefore, for any measures not to be considered as arbitrary for the purpose of Article 65(3), it must be objectively justified. That is, it must be shown that the measure was intended to protect the integrity of the tax system and was necessary to achieve this end. This requirement has also been strictly interpreted, and in the case of the court stated two further considerations when determining whether a differential tax measure fell within the meaning of Article 65(3). The first consideration is whether the situation of the resident and non-resident taxpayer are comparable. If they are not comparable, then any distinguishing tax measures could be lawful under EU law if, however, the situation are comparable. Then the second consideration is whether the differential treatment can be justified by overriding reasons in the general interest and whether it is proportionate. If this is not the case, then the national measure will be found to be arbitrarily discriminatory and contrary to Article 65(3). Simple word में इसकी explanation ये है कि जहाँ पे उसकी इस प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगी और जस्टिशिएबल नहीं होगी बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट. ठीक है. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस तो उसको उस रिस्ट्रिक्शन को जो है वो ब्रीच समझा जाएगा आर्टिकल का. अदरवाइज अगर वो रिस्ट्रिक्शन जो स्टेट ने इम्पोज की है नॉन रेजिडेंट के ऊपर और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है और वो जस्टिशिएबल है तो उसी तरह एप्लीकेबल होगी एज पर नेशनल लॉ. ठीक है. In case the court looked more closely at first consideration of whether the situation of
different taxpayers are comparable. मतलब फर्दर एक और केस में भी उन्होंने इसी प्रिंसिपल को लेट डाउन किया। उन्होंने कहा कि अगर जो उनके टैक्स इम्पोजिशन है वो एक्सेप्टेबल है तो या कंपेरेबल है तो वो नेशनल लॉ जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। The case concerned a national law which provided tax credits in respect of national insurance only to taxpayers insured under the National Social Security System. The court held that although such a measure was capable of hindering the free movement of capital, it could be justified under Article 65(1)(a) by the objective difference between situation of a person who is insured under the national security system and that of a person who is not insured. ठीक है, अब ये जस्टिफाइबल है क्योंकि एक इंश्योर्ड और नॉन इंश्योर्ड पर्सन का डिफरेंस है, तो उस पे जो उन्होंने अगर टैक्स इम्पोजिशन का की डिस्क्रिमिनेशन है तो वो जस्टिशिएबल है और प्रोपोर्शनेट है, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है अंडर नेशनल लॉ. Contrast this decision with the case in which the court had to consider a national measure which provided for a tax deduction on gifts to charitable bodies. This rule applied only to gifts made to national charitable bodies and not to those made to the charitable bodies established in another member state. The court found that since the possibility of obtaining a deduction for tax purposes can have a significant influence on the donor's attitude, the inability in the member state of taxation to deduct gift to bodies recognized as charitable if they are established in another member state is likely to affect the willingness of taxpayer in the former member state to make gifts for their benefit and constitute therefore a restriction on the free movement of capital prohibited as a rule by Article 63(1) here. ठीक है, अब ऊपर प्रिंसिपल जो है वो बड़ा सिंपल है, उसमें उन्होंने कहा अब दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक इंस्टीट्यूट जो ऐसा जो गिफ्ट दे रहा है चैरिटेबल बॉडी को, ठीक है, विद इन द मेंबर स्टेट, और उसके ऊपर टैक्स इम्पोजिशन है अगर किसी हद तक, और वो अगर किसी और मेंबर स्टेट से है और वो गिफ्ट दे रहा है तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट है. तो इस प्रैक्टिस को कोर्ट ने जो है वो डीरेल किया या उसको डेटर किया ताकि जो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है उसका प्रोसेस जो है वो किसी तौर पे हिंडर ना हो. ठीक है, the court then went on to find that the measure could not be justified under Article 65(1)(a) as the relevant charities were in an objectively comparable situation in terms of their tax treatment. ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशन जो है ये बिटवीन मेंबर स्टेट इन द मेंबर स्टेट हो या आउटसाइड द मेंबर स्टेट है तो ये कंपेरेबल है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती. इसलिए अगर इसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन या डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएट किया जाएगा इसकी टैक्स इम्पोजिशन में तो वो जो है वो ब्रीच ऑफ आर्टिकल 63 होगी. ठीक है जी. In cases, the court found that a measure which subjected capital gains resulting from the transfer of immovable property to a greater tax burden for non-residents than for residents was precluded by Article 63(1). Moreover, it found that it could not be justified under the tax differentiation derogation of Article 65(1)(a). The court stated that where the taxation is in question concerns only one of the categories of income received by a taxable person, whether they are resident or non-resident, it concerns both categories of taxable persons. And the member state in which the taxable income arises is the member state concerned. There is no difference in situation which is capable of justifying the differential tax treatment for the purpose of Article 65(1)(a). जिस 65(1)(a) के अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं टैक्स इम्पोजिशन की, कुछ कंडीशंस में जो मेंबर स्टेट है उनको एम्पावर किया या उनको डिस्क्रेशन है टैक्स इम्पोज करने का और इस चीज को डिफरेंशिएट करने का बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, उसको आर्बिट्रेरली एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसमें इस केस में उन्होंने डिफरेंट डेरोगेशंस दिए हुए और उसकी कंडीशंस दी हुई है. अगर द टैक्सेशन इन क्वेश्चन कंसर्न
only one of the categories of income received by a taxable person, whether they are resident or non-resident. उस पे ये बात कर रहा है कि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो उस टैक्स की पर्सन टैक्सेबल है, वो बेशक नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, तो वो सेम सेम उन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। It concerns both categories of taxable person। अब ये उसी को आगे फर्दर एलेबोरेट कर रहा है कि दोनों किस्म की जो कैटेगरीज हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स, उनके ऊपर सेम कैटेगरी के ऊपर वो एप्लीकेबल है। The member state in which the taxable income arises is the member state concerned. There is no difference in situation which is capable of justifying the differential tax treatment for the purpose of article। अब वो ये कह रहे हैं कि जो मेंबर स्टेट है जो टैक्स इंपोज कर रही है दोनों के ऊपर, ठीक है, तो वो इस चीज पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि जो टैक्स इंपोज किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट भी उसी मेंबर स्टेट का ही उस टाइम पार्ट है, तो इसलिए उसको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती कि वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई नया टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता। The court considered a Swedish national tax law which provided that share repurchase payments made to resident shareholders were taxed as a capital gain with the right to deduct the cost of acquisition. The law also provided that the same payments made to non-resident were to be taxed as a dividend. With no right to deduct the cost of acquisition, the court found the measures to be in breach of Article 63 and could not be justified under Article 65 under derogation. According to the court, since the cost of acquisition was directly linked to the payment made on the occasion of share repurchase, there was no objective difference between the situation of resident and non-resident such as to justify differential treatment। अब यहाँ पे जो है वो उलट हो रहा है, ठीक है, जो शेयर रीपरचेज पेमेंट थी उसके ऊपर कैपिटल गेन जो है वो तो चार्ज कर रहे थे और साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी चार्ज कर रहे थे, मतलब जिसने वो शेयर एक्वायर किया या उसको रीपरचेज किया उसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो है वो कॉस्ट इंपोज की जा रही थी रेजिडेंट के ऊपर, जो कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं थी। तो इसमें भी कोर्ट ने ये हेल्प किया कि सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन है, जो रेजिडेंट कर रहा है और सेम ट्रांजैक्शन है एक नॉन रेजिडेंट कर रहा है, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है ही नहीं। दोनों जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, या तो दोनों वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे करेंगे या दोनों नहीं करेंगे। तो इस जो पेमेंट है वो बेसिकली तो एक पर्पस के लिए वो शेयर पर रीपरचेज पेमेंट, ठीक है, तो उसी के ऊपर वो कॉस्ट एक्विजिशन की कॉस्ट इंपोज की जा रही है रेजिडेंट्स के ऊपर, जो कि नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर नहीं है। तो जो पर्पस है उसका वो तो सेम है, तो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी यहाँ पे मामला नहीं है, ठीक है। और इसको आर्टिकल 63 का ही ब्रीच डिक्लेयर किया गया है, और जो डेरिवेशन है आर्टिकल 65(1) में जो इन्होंने लेट डाउन की हुई है उसके भी अगेंस्ट है। If the court has found that the situation of two groups of taxpayers are objectively comparable, it will then look at the second consideration, namely whether the measure is proportionate and whether it can be justified by an overriding reason of general interest. In case so and so, the court had to consider, and the court has also rejected the justification that the measure was necessary to enable fiscal supervision. In case so and so, the court considered a measure which required a charitable body established in another member state to meet certain conditions in order to be entitled to a tax exemption. The court found that such requirements were precluded under Article 63 and 65 as they could not be justified solely on the ground that as the charity in question was established in another member state, it had only limited tax liability in the host state territory. The Article 65 ने जो conditions laid down की थी, जिसमें intervention या discretion member state के पास था,
उसमें एक थी फिस्कल सुपरविजन थी, जो हमने ऊपर रीड आउट किए हैं, 5 चीजें थी। तो कोर्ट ने प्रिंसिपल डिराइव कर ली अभी तक फिल वक्त, जिसको इस चीज का नाम दिया गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। तो उसमें एक था फिस्कल सुपरविजन, और कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट किया फर्दर केस डिसाइड करते हुए। और उसमें उन्होंने वही जो चैरिटेबल बॉडी वाली डिस्कशन में केस पर डिस्कस किया था, वही यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है। इसमें कह रहा है चैरिटेबल बॉडी एस्टेब्लिश इन अनदर मेंबर स्टेट मीट सर्टेन कंडीशन इन ऑर्डर टू बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स एग्जम्पशन। ठीक है, अगर टैक्स एग्जम्पशन कोई क्लेम कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने सर्टेन कंडीशंस इम्पोज की, और कोर्ट ने उन कंडीशंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, और इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 63 और 65 डिक्लेयर किया उसको। ठीक है, और प्रिंसिपल लेड डाउन किया बिफोर ग्रांटिंग अ फाउंडेशन अ टैक्स एग्जम्पशन अ मेंबर स्टेट इज ऑथराइज्ड टू अप्लाई measures enabling it to ascertain in a clear and precise manner whether the foundation meets the conditions imposed by national law in order to be entitled to the exemption and to monitor its effective management, for example, by requiring the submission of annual accounts and an activity report. Admittedly, where foundations are established in another member state, it may prove more difficult to carry out the necessary checks. Nevertheless, these are disadvantages of a purely administrative nature, which are not sufficient to justify a refusal on the part of the authorities of the state concerned to grant such foundation the same tax exemptions as are granted to foundations of the same kind, which in principle have unlimited tax liability in the state. ठीक है, क्लियर है, इसका एक्सप्लेन कर दूं। क्या चीज? Nevertheless, these are disadvantages of a purely administrative nature, which are not sufficient to justify a refusal on the part of the authorities of the state concerned to grant such foundations the same tax exemptions as are granted to foundations of the same kind. ठीक है, मीन्स वही उसी बात की रेपिटेशन है जो ऊपर डिस्कस हो रही है, ये जिनकी बेसिस सेम है, ठीक है, जिन पे टैक्स इम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, और जो अथॉरिटीज एस्टेब्लिश है अदर मेंबर स्टेट में, ठीक है, उनके ऊपर जब आप टैक्स इम्पोज करते हैं तो उसके ऊपर आप डिफरेंट कंडीशन में टैक्स इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो जब उनकी फाउंडेशन सेम है, मतलब एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल लेवल पे, ठीक है, उसको आप टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं, और एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो मेंबर स्टेट में है, उनको आप टैक्स एग्जम्पशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। फाउंडेशन दोनों की सेम है, दोनों चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फाउंडेशन सेम है, लेकिन एक टैक्स एग्जम्प्टेड है और दूसरी टैक्सेबल है। ठीक है, तो उसको आप टैक्सेबल किसी तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते जब उनकी फाउंडेशन सेम है, और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस बेस पे, वो अथॉरिटीज जस्टिफाई नहीं कर सकती, जो कंसर्न अथॉरिटी है जिन्होंने उस एग्जम्पशन को ग्रांट करना है, कि वो जो उनकी सर्टेन कंडीशंस उन्होंने इम्पोज की हुई है उसके ऊपर, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर सकते। तो इन बेसिस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इन बेसिस के ऊपर, और उसके साथ साथ जो उसके स्टैब्लिश्ड लॉज होंगे उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के, वो अंडर ईयू लॉ ही होंगे क्योंकि मेंबर स्टेट में है। तो जब वो एक जगह पे एप्लीकेबल है उसके ऊपर वो लॉज, तो दूसरी जगह पे क्यों नहीं होंगे? ठीक है, आर्टिकल 65(1)(b), आर्टिकल 65(1)(b) TFEU allows member state to take all requisite measures to prevent infringement of national law and regulations, in particular in the field of taxation and the prudential supervision of financial institutions. It also allows member states to lay down declaration procedures for purposes of administrative or statistical information, or to take measures which are justified on the grounds of public policy or public security.
ठीक है। अब वो जो हमने ऊपर चीज डिस्कस की थी कि उन्होंने जो प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड थी उनको, अगर वो उन्होंने डिक्लेरेशन की सूरत में प्रोवाइड की हुई होती स्टेट ने, नेशनल लॉ ने, तो फिर वो एडमिसिबल थी। चूंकि उसको उन्होंने प्रायर ऑथराइजेशन का नाम दिया हुआ था, इसलिए वो एडमिसिबल नहीं थी। लेकिन वो प्रायर ऑथराइजेशन जो है उसके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं। वो प्री रेक्विजिट क्या है कि वो जस्टिफाइड हो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है, वो जब हमने पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात की थी स्टार्ट में, वो पब्लिक इंटरेस्ट की लेवरेज लेके कोई ऐसा लेजिस्लेशन या ऐसे रूल्स रेगुलेशन ना पास करे जो काउंसिल के या ईयू के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रीटीज हैं, उनके अगेंस्ट। ठीक है। It is important to note that this list of areas in which the member state can take requisite measures is not exhaustive. This was illustrated in the cases so and so, where the court held that Article 65(1)(b) could be extended to encompass measures such as those designed to prevent illegal activities of comparable seriousness, such as money laundering, drug trafficking, or terrorism. ठीक है, उसमें वो पब्लिक पॉलिसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने पहले ये चीज को भी डिफाइन किया है कि इतने एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए ये जो इससे रिलेटेड जो मेजर्स हैं या जो इस लिस्ट है, लिस्टेड एंड रिक्वायरमेंट्स इन आर्टिकल 65, वो इतने एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए कि वो प्रोपोर्शनेट ना हो या वो बियॉन्ड लिमिट हो। ठीक है, या जो उनका ऑब्जेक्टिव है जो उन्होंने अचीव करना है उससे वो एक्सीड कर जाए। ठीक है, और लेकिन वहां जहां पे इलीगल एक्टिविटीज की बात होगी वहां पे उनके पास डिस्क्रेशन है उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते। ठीक है। However, as with Article 65(1)(a), measures under Article 65(1)(b) are also subject to Article 65(3) and must not represent a means of arbitrary discrimination. वही बात सेम दोबारा repetition। ठीक है। Requisite measure to prevent infringements of national law and regulations in the field of taxation and the prudential supervision of financial institutions. In case so and so, the court found that Article 63(1) and 65(1)(b) did not preclude a requisite measures taken in order to prevent tax evasion. This case concerned a requirement under Austrian law to pay a stamp duty on a loan contracted in another member state. According to the court, such a measure was permissible under Article 63(1) as it prevented taxable persons from evading the requirement of domestic tax legislation, that is tax evasion. It also held that such a measure was justified under Article 65(3) as it applied without discrimination to all borrowers resident in Austria regardless of their nationality or the place where the loan was contracted. हाँ, बेसिकली उसमें पहले वाला केस था उसी से रिलेटेड ही है, सेम फैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसमें किसी को भी टैक्स एवेड करने से या टैक्स एग्जम्पशन से किसी को भी फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी अनलेस अनटिल के वो प्री रेक्विजिट इसके पूरे नहीं। ठीक है, तो ये जो पर्पस है आर्टिकल 65(1) और 63 जो है वो एप्लीकेबल तो है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर भी और टैक्सेशन के ऊपर भी, लेकिन अगर कोई इसको एज अ डिफेंस यूज करेगा टैक्स इवेड करने के लिए तो वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पे ये इसलिए एप्लीकेबल है कि यही सेम प्रिंसिपल जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट का था उनके रेजिडेंट्स के ऊपर भी था और उनके जो नॉन रेजिडेंट्स है उनके ऊपर भी था और जो लोन किसी और ने बोरो किया हुआ किसी और मेंबर स्टेट से उनके ऊपर भी। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल जो है प्रोपोर्शनेट था, जस्टिशिएबल था, जस्टिफाइबल था, इसलिए कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को यहाँ पे जो इन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए हैं उसको कोर्ट ने एडमिसिबल डिक्लेयर किए। Contrast this case with the judgment in case so and so where the court considered national measures which prohibited residents from acquiring securities of loans which were issued abroad in another member state.
the court refused to accept both justification offered by Belgium, namely that the mayor was necessary to preserve fiscal coherence and that it was necessary to ensure the effectiveness of fiscal supervision. The first argument was rejected because there was no direct link between any fiscal advantage and disadvantage, which should be preserved in order to ensure fiscal coherence. The second argument was rejected as the national rule was disproportionate. A general presumption of tax evasion or tax fraud could not justify a mayor that impeded a free movement of right. ठीक है, अब इसमें भी वो सेम प्रिंसिपल इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने जो दो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों हमें डिटेल में डिस्कस करके उनको रिजेक्ट किया है। पहला क्या है कि the argument was rejected because there was no direct link between any fiscal advantage and disadvantage which should be preserved in order to ensure fiscal coherence. अब जो फिस्कल सुपरविजन वाली बात हो रही थी, ठीक है, उसको भी वो फुलफिल नहीं करता क्योंकि इसमें जो जिसके ऊपर इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी उसको इसमें कोई किसी किस्म का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था, ना बेनिफिट था ना ही उसको डिसएडवांटेज था कोई इस चीज का, इसलिए पहला आर्गुमेंट भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट वाज रिजेक्टेड एज द नेशनल रूल वाज डिसप्रोपोर्शनेट, जो उनका बेसिक प्रिंसिपल था वो ही डिसप्रोपोर्शनेट था और वो जस्टिफाइबल भी नहीं था। A general presumption of tax evasion or tax fraud could not justify a measure that impeded a free movement right. मतलब एक प्रिजम्पशन की बेस पे कि ये बंदा जो है या ये कंपनी जो है उसके ऊपर अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते जो आप ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट में लेते आए हैं कि ये टैक्स फ्रॉड हो सकता है या फिर ये टैक्स इवेड कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को आप एज अ डिफेंस यूज करके किसी में भी वो प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल इंपोज नहीं कर सकते। अब बेसिकली ये जजमेंट्स जो हैं जो हम अभी तक हमने पढ़ी हैं वो उसी प्रिंसिपल को एलेबोरेट कर रही हैं, जहां पे उन्होंने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया उसके जितने प्री रेक्विजिट्स हैं वो आप देखेंगे वो सारे के सारे जजमेंट्स के थ्रू अडॉप्ट किए गए, जजमेंट के थ्रू ही डेवलप किए गए हैं और उसी के थ्रू अडॉप्ट किए गए। ठीक है, जो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन है वो भी डायरेक्टिव के थ्रू अडॉप्ट की गई और डायरेक्टिव भी एक केस में प्रोवाइड किए गए, एक केस में वो डायरेक्टिव प्रोवाइड किए गए एज एन एनेक्सर यूज हुआ, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल को और उसी डेफिनेशन को कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसके बाद फर्दर जितने प्रिंसिपल डिराइव किए गए हैं उनके भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी जगह पे उस चीज को अलाउ किया जा रहा है लेकिन सर्कमस्टेंसेस वेरी कर रहा है तो वही चीज जो है उससे रिस्ट्रेन की है। ठीक है, public policy and security. In this part of Article 65(1)(b), the court has largely drawn from the case law of the other fundamental freedoms. The exception is narrowly interpreted and the burden of proof lies with the member state. That is, the member state must prove that the measure is necessary and proportionate for the objectives of public policy or public security. In the case, the court decided that the difficulty in identifying and blocking capital once it has entered a member state may in principle justify differential treatment of transaction involving foreign direct investment under Article 65(1)(b). The case concerned a measure which made foreign direct investment subject to prior authorization. ठीक है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, पहले हम डिस्कशन करते रहे हैं उससे रिलेटेड जो मेंबर स्टेट के प्रिंसिपल है, अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हो रही है और उसी कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने डिटर करते हुए डिक्लेयर किया है, द केस कंसर्न अ मेजर व्हिच मेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू प्रायर ऑथराइजेशन इज इन ब्रीच ऑफ आर्टिकल 65(1)(b) ऑफ TFE। ठीक है, the court found that such a measure could be justified provided the action protected against pose a sufficiently serious and genuine threat to fundamental interest of society. In this particular case, however, the measure was stated in very general terms and left the person concerned unable to ascertain the specific circumstances in which prior authorization was required.
As such, the mayor in question was in breach of both the principle of legal certainty and Article 63(1). The court has also established that the requirements of public security cannot justify derogation from Article 63(1) unless the principle of proportionality is observed. This means that any derogation must remain within the limits of what is suitable for securing the objective which it pursues and must not go beyond what is necessary in order to attain the pursued objective. बार बार कांड यहाँ से पढ़ा, ठीक है. Contrast the decision in two golden share cases. The court relied on its previous judgment in the Campus Oil case to accept a public security justification given by the Belgian government in respect of its golden share in two energy companies. The court held that Belgian government could continue to hold its golden shares in the company on the grounds that it would safeguard energy supplies in the event of crisis, provided the shares enabled the country to maintain a minimum level of energy supplies and that the steps taken to guarantee that minimum level were proportionate. ठीक है, अब ये एक्सेप्शन है, ठीक है. इसमें कोर्ट ने जो इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है वो इस बेसिस पे किया हुआ है कि वो जनरल इंटरेस्ट में है, ठीक है. और उसमें सिक्योरिटी किस बात की है? सिक्योरिटी इस बात की है कि अगर कंट्री सफर करती है एनर्जी क्राइसिस से तो अपने शेयर होल्डिंग की बेस पे उस एनर्जी कंपनी से वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी को, ठीक है. तो इसमें डुअल फैक्टर है, ठीक है. शेयर होल्डिंग भी उनके पास है, ठीक है, और रीजनेबल है, और उसके साथ दूसरा ये है कि उनके पास सिक्योरिटी है इस चीज की कि अनलेस अनटिल एनर्जी क्राइसिस अगर कंट्री में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में या जनरल इंटरेस्ट में वो सिक्योरिटी जो है वो उसको एनेबल करेगी उस कंट्री को, मेंबर स्टेट को, कि वो अपने इस क्राइसिस को ओवरकम कर सके, ठीक है. In Commission versus France, the court held that a French rule requiring the prior authorization of any direct or indirect shareholding over and above certain limits of a company in which the government had golden share was disproportionate and contrary to the principle of legal certainty. This was because the investors were given no indication as to the specific objective circumstances in which prior authorization was applied and the wide discretionary power provided by the authorities constituted a serious interference with the free movement of capital, ठीक है. इसमें भी वही डिक्लेरेशन वाली सेम डिक्लेरेशन वाली कंडीशन है. एक रूल ऐसा जो पहले से लोगों को प्रोवाइड ही नहीं किया गया या एप्लीकेबल ही नहीं है या उसकी अवेयरनेस नहीं है लोग, ठीक है, उसको उस ऑथराइजेशन को कोई एज्यूम कैसे कर सकता है? और उसके बाद जब कोई इन्वेस्टर वहां पे आएगा और इन्वेस्ट करेगा और उसको वो चीजें जो है उससे फेस करनी पड़ेंगी तो वो एक इन्फ्रिंजमेंट होगी उस आर्टिकल की जो इस राइट को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है. Free movement of capital over freedom of establishment. Article 65(2) states that the provisions on the free movement of capital shall apply without prejudice to the applicability of restrictions on the right of establishment, which conform with EU law. This provision is also subject to Article 65. ठीक है. अब 65(1)(b) और 1(a) हमने पढ़ लिया है, उसके बाद अब 65(2) है. 65(2) जो है उस वो अकॉर्डिंग टू फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल वो रिलेट कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ इसमें, ठीक है. The right of establishment which conform with EU law, the provision is also subject to Article 65(3). अच्छा, इसमें वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है कोई किसी मेंबर स्टेट को या कोई थर्ड कंट्री के साथ अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट डेवलप होती है उसके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस होगी
into the context of free movement of capital, उसको prohibit कर रहा है section 65(2) of section article 65(2) of TFE, ठीक है? Capital movement to and from the third countries, ठीक है? Article 64(1) allows member state to apply lawful restriction on agreements on capital movement to third countries that were in existence on 31st December 1993. Article 64(2) requires the Council only to endeavor to achieve free movement with non-member countries to the greatest extent possible. ठीक है? अब ऊपर जो है उसमें उसने स्कोप उसका वाइड किया है टूवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? और 64(1) जो है वो डील कर रहा है थर्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड तो नहीं, सॉरी, थर्ड कंट्रीज कहना चाहिए, जो आउट ऑफ ईयू जो होंगी, मेंबर स्टेट जो नहीं है वो थर्ड कंट्री कंसिडर कीजिए। हाँ, ईसी के साथ ईयू से जो बाहर होंगे, ईसी तो उसका एक आप कह लेना उसकी ब्रांच है ना, ईसी। हाँ, वो ईसी तो उसकी ब्रांच होगी, जो ईयू से बाहर है वो थर्ड कंट्री कंसिडर। हाँ, इकोनॉमिक वो भी उसका पार्ट ही है ना। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये तो ईयू का पार्ट है ना, उससे जो भी बाहर होगी वो थर्ड कंट्री कंसिडर की जाएगी, ठीक है? इसमें वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की, वो रिस्ट्रिक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है, कैपिटल मूवमेंट टू थर्ड कंट्रीज that were in existence on 31st December 1993, ठीक है जी? Article 66 empowers the Council to take safeguarding measures in exceptional circumstances where capital movement to or from third countries cause or threaten to cause serious difficulties which may affect the operation of the EMU. However, these restrictions are strictly limited in their application and duration, ठीक है जी? अब आर्टिकल 66 जो है वो काउंसिल को एम्पावर कर रहा है, कोई भी मेंबर स्टेट अगर किसी थर्ड कंट्री के साथ डील करती है और काउंसिल इस चीज को ऑब्जर्व करती है, या काउंसिल इस चीज को अप्रीहेंड करती है कि ये थ्रेट है या कोई डिफिकल्टीज या कोई हर्डल क्रिएट कर सकता है इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, तो काउंसिल के पास डिस्कशन है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने, ठीक है? आर्टिकल 66 जो है वो बेसिकली काउंसिल को एम्पावर करता है। बेसिकली उसको एम्पावर कर रहा है डिस्क्रेशन, और वो डिस्क्रेशन का यूज ही तब करेगा जब उसने उस थ्रेट को ओवरकम करना है, तो वो सेफ गार्ड का काम ही करेगा। In case the court stated that under certain circumstances, a member state will be able to demonstrate that a restriction on the movement of capital to or from third country is justified for a particular reason in circumstances where that reason would not constitute a valid justification for a restriction on capital movement between member states. The Economic and Monetary Union (EMU), the emergence of the EMU. The decision to form the EMU represented a major step forward in the integration of EU economies, since it involves the coordination of economic and fiscal policies, a common monetary policy and a common currency. Some countries have taken integration further and adopted the euro. The EMU was to be rolled out in 3 stages. The free movement of capital was introduced through directive and there was a push for the closer coordination of economic policies and greater cooperation between central banks. The coordination of economic and monetary policy was reinforced, and the European Monetary Institute, the precursor to the European Central Bank, was established with the principal task of preparing the instrument and procedures necessary for carrying out a single monetary policy in third stage. Stage 3 saw the fixing of exchange rates, the launch of the euro, and the application of more preemptory treaty provisions concerning economic policy
such as the obligation on member state to avoid excessive government deficits. In order for member state to move from stage 2 to stage 3, strict convergence criteria had to be met. This included requirements demonstrating the sustainability of the government financial situation. Other criteria concerned the achievement of a high degree of price stability demonstrated by a low rate of inflation, the avoidance of currency fluctuation, and durable economic convergence as reflected in long-term interest rate. ठीक है, बेसिकली जो उनका पर्पस था वो एक सिंगल इकोनॉमिक फोरम बनाने का था, ठीक है, सेम करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने का था ताकि ट्रेड हार्मोनाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो सस्टेन कर सके। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था कि एक करेंसी होनी चाहिए और ट्रेड जो है वो बॉर्डर फ्री होनी चाहिए। उस प्रिंसिपल के लिए उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज लेट डाउन की, उसमें एक जो है वो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी है। तो एक जो सारी स्टेजेस इन्होंने तीनों डिफाइन की हैं वो बेसिकली कैपिटल मूवमेंट से रिलेटेड है। कैपिटल अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो उस पर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस या कौन कौन से चेक एंड बैलेंसेस होंगे जिनको आपने अडॉप्ट करना है या सुपरवाइज करना है। ठीक है, आगे उन्होंने उसका पर्पस बता दिया एंड में। हाई डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी है, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अवॉइडेंस ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन है, ड्यूरेबल इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, रिफ्लेक्टेड इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है जी। The scope of the EMU, in practical terms, the EMU entails the coordination of economic policy making between member states, the coordination of fiscal policy, notably through limits on government debt and deficit. ठीक है, ये इसका स्पेस का इशू है। ठीक है, गवर्नमेंट डेट एंड डेफिसिट। An independent monetary policy run by European Central Bank, the single currency and the euro area. The provision on monetary policy can be found in Article so and so. The ECB has number of key functions in this area. ठीक है जी। With regard to economic policy, Article 121 1 TFU provides that member state must have regard to their economic policy as a matter of common concern and must coordinate them in accordance with the duties laid down in Article 120 TFU. These treaty-based procedures are supplemented by the Stability and Growth Pact and related reforms on the prevention of excessive government deficit. अच्छा जी, इनका स्कोप इन्होंने डिफाइन कर दिया है। वही जो हमने चीजें ऊपर डिस्कस की हैं वही है। दोबारा से एक दफा अगर कहते तो मैं रीड आउट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, नोटेबली थ्रू लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट डेट्स एंड डेफिसिट है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि रन की जाएगी अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। द सिंगल करेंसी है, ठीक है, यूरो वाला पॉइंट जो है सिंगल करेंसी है। द प्रोविजंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, वो उसके बाद वो रेलेवेंट उन्होंने आर्टिकल्स लेट डाउन कर दिए हैं कि जो प्रिंसिपल हैं सॉरी जो प्रोविजंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी के उस कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो उनको डील कर रहे हैं। ठीक है जी। Recent development in the EMU, the future of the Eurozone was thrown into doubt by the recent sovereign debt crisis. The European Financial Stability Facility was set up in 2010 to provide assistance to Eurozone states in difficulty. Bailouts were organized by the EU in conjunction with the IMF. In the wake of financial crisis, the EU Commission proposed several mechanisms to regulate action in the European financial sector. One example is the single supervisory mechanism to increase EU oversight over systematically important banks. ठीक है जी। EMU, हाँ, बेसिकली है कि इन्होंने डिपार्टमेंट डेवलप कर दिया
ठीक है, उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं या डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो उसके अंडर गवर्न कर रही हैं, उसमें उसी का पार्ट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। हाँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक उसका पार्ट है। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगर सिर्फ सिर्फ आप उससे रिलेट करेंगे तो बाकी सारी जो पॉलिसीज हैं वो तो निगेट कर देंगे ना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो स्पेसिफिक चीजें डील कर रहा है, वो जो हमने एंड में डिस्कस की हैं वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंडर आ रही है। ठीक है जी। हाँ हाँ, ठीक है, तो हाँ वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो तो नहीं है, उसके अलावा टैक्सेशन भी आ रही है। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो जो है वो बाकी सारी चीजें दे रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी देख रहा है उसकी। ठीक है, और उसके बाद उसमें साथ आगे फर्दर उसी पॉइंट में एक्सप्लेन किया ना, द ईसीबी हैज अ नंबर ऑफ की फंक्शन इन दिस एरिया। ठीक है, तो उसके रोल जो है वो उसका बड़ा लिमिटेड है। ईएमयू का जो रोल है वो बड़ा वाइड है। ठीक है, वो सारी चीजें डील कर रहा है, उसमें टैक्सेशन भी आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज भी आ रही है, सारा कुछ है। आगे वो फर्दर किस तरह डील कर रहे हैं उसको उसको सुपरवाइज कर रहा है ईसीबी।